Okay. I'll start with the topic. First of all, very good evening to everyone. And I'll try both the hogi. So what is the main purpose of having this live session through the Zoom is that all the students who are joining by Zoom can directly talk to me, interact with me, and I will be in a position to in the topics of environment and science and technology, which are now getting the lot of weightage for the examination. And I believe that all of you are in a serious mode of, not only help you in the content wise, but also try to, keep your motivation level high. Right? So, what I always say that this exam is always easy exam. It's not a difficult exam. If you do it in the right approach, I'm very, very sure that you will qualify the exam. So what I'm doing going for this, today I planned my session to discuss from PIB, Press Information Bureau. So I will be going through different sources. I'll go through the UN, United Nations initiatives in the field of environment and science and technology, which UPSC subject matter experts can ask question on that. Right? I will be delving with those kind of areas. I will focus on that. At the same time, different magazines, whatever the magazines are there, I'm filtering out the content and I'll do that. And one more thing is that after this session gets over, I will share the documents in my Telegram channel. Most of you are connected in Telegram channel. You'll get the document there. So nothing to worry about the document. Yes. Meanwhile, when I'm discussing a content or a topic, you can write it down. तो जैसे जैसे टॉपिक्स में डिस्कस करता जाऊंगा, अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं ये जरूरी पॉइंट्स हैं, तो आप साथ साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं. तो ये चीज मैं ध्यान रखूंगा. और मेरा पर्पस है कि टॉपिक्स ऐसे हों जो कि क्वालिटी पार्ट हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो और आपको हेल्प हो, है ना. एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस आ जाएं जिससे आपको मदद मिले. So that is what my target is all about. And in that context, I will be covering a lot of areas there. So let me first do one thing. Let me share my screen here. You'll be able to see this part of it here. Right, this is visible to everyone. So if you look at this document here, Kodaikanal Solar Observatory celebrates 125 years of studying the sun. The two things are there. One is that solar observatory. Another thing is 125 years, right? Celebrating 125 years. It is a landmark year, and may be possible that UPSC can ask question on that. है ना, इसमें क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है क्योंकि एक बहुत लैंडमार्क ये 125 इयर्स सेलिब्रेट किया जा रहा है. तो मैं कई सारी चीजों को बताऊंगा मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए. वी विल गोइंग टू दैट वन. तो यहाँ पर सबसे पहला ये चीज है कि दिस प्लेस कोडाईकनाल, है ना. कोडाईकनाल का यहाँ पर जो है ये पार्ट यहाँ पर आ रहा है, कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी पार्ट. अगर आप ये देखो व्हाट इज गिवन हियर, आइकॉनिक कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, है ना. Astrophysics, Indian Institute of Astrophysics, IIA, that is a scientific organization which has gone into this part of it. So looking into the historical development, this is a very landmark event which was part of there. And you can see here what is given: 1.2 lakh digitized solar images about this area observatory, whatever data it has collected, right? It has all the depository, the library, and this is funded by the Department of Science and Technology. Now, if you look at further here, A.S. Kiran Kumar, you know about Mr. Dr. A.S. Kiran Kumar. He was earlier chairman of ISRO, former chairman of ISRO, and right now he is a part of the chairperson of this observatory, right? So he was there with the logo, right? Logo was there. So now you can see here, 1st April 1899, that time British India started this observatory, right? And then later it came under Madras Observatory in 1792, right? And then finally, it is independently working there.
So what you come across here, this is the site. And you all know that Kodaikanal is a tourist place. Kodaikanal, you find that a lot of tourists, they go to Kodaikanal, during the summertime. It is also ecologically important also there. Environmentally very, very important. And what you see, this is the house where we have a telescopes. This is what is solar observatory. This is study of sun. This is what comes here. And this is where the foundation day, it was celebrated by the government there. Now, what is very important here, this particular PIB update, first I'm discussing that, then I will write something and tell you there. Here, last paragraph talks about very important. You all know about Aditya L1 mission. Aditya L1 mission, which is a ISRO, right? A solar mission. There's one instrument called VELC, Visible Emission Line Coronagraph, which is on the satellite, Aditya satellite placed right now on Lagrange point 1. This particular instrument was built by this particular observatory. कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जो कि कोई सैटेलाइट में होते हैं, वो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है. तो यहाँ पर ये देखा जाए, ये जो कोरोनल जो है, रिसेंटली आदित्य L1 में इसको लॉन्च किया गया. वैसे ही सेम सोलर ऑब्जर्वेटरी, सोलर टेलीस्कोप भारत में लद्दाख में भी है. हेनले इज अ प्लेस इन लद्दाख, एंड लद्दाख इज कंटिन्यूसली इन द न्यूज, है ना, लगातार लद्दाख न्यूज में आता है. तो हेनले इन लद्दाख वी हैव अ सोलर टेलीस्कोप, वहां भी है. तो ये चीज है जो मैंने अभी समझाया है. तो व्हाट आई डू नाउ, लेट मी गो इनटू द डिटेल पार्ट ऑफ इट. तो पहला ये चीज समझ रहे हैं कि whenever you come across such kind of a release, press release or any article, तो उसका that is an indication, that is a kind of you can understand that is basically a kind of a indication telling you that you be prepared with this topic, कि वो बताता है कि आप इस टॉपिक के लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके संदर्भ में यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा. एंड नॉट ओनली यूपीएससी एग्जाम, my saying is that science and technology is not that only for civil service exam at the UPSC and central level, but whichever exam you appear, आप कोई भी एग्जाम देते हैं, स्टेट लेवल एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक्स कॉमन होता है, वहां भी क्वेश्चन पूछे जाता है. तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए जो पॉइंट मैं यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर, इसलिए ये बहुत जरूरी भी आ जाता है. तो मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ चीजें मैं लिखकर मैं समझाता जाऊंगा, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड the things about that. So this is what I'll have a note page, right, where I can write and make you understand कि अगर क्वेश्चन आएगा तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, है ना, किस ढंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो वो पार्ट को मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ. जिससे क्या होगा कि you will be prepared, you will be prepared with the kind of question there. So what I'll do here, I will again share my iPad where I will write and explain the things there. What are things you have to keep in mind regarding this area of topic in astronomy, space and astronomy? What are things you have to just be focused on that? So let us just again, I'm sharing again the screen here. Just one second. I will connect the iPhone. Okay, you'll get this. All right, so what I'll do here, look at here. See, when you say talk about astronomy, right? Astronomical science, when we study about the universe and different events, the first thing comes here, that is a observatory. See, there are observatory which are of different types, right? There are different types of observatory which are built worldwide. So in this case, the first thing which I would like to add here, that is in terms of telescopes. Telescopes part of it. Now, in this context, what is very important to understand that in India, I'll write one name of the scientist, M.K. Venu Bapu.
Manali Kalat Venu Bapu, right? He is a very eminent astronomer of India, right? He played a very important role in terms of building observatories in India, right? He has also built a Nizamia Observatory, which is a part of, you know, Telangana. That's part of Hyderabad and all this. So M.K. Venu Bapu, he is a father of, you can say, he is a father of astronomical observatories in India. Whatever observatories where we have built a telescope, he has played a very important role. Now, see, from the UPSC exam point of any exam point of view, नेम ऑफ साइंटिस्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों पे आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा। बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि हाँ, कि कुछ डेवलपमेंट के पॉइंट में कि ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये चीज को डेवलप किया है। तो जब यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी की बात हम करते हैं और जब ऐसे टेलीस्कोप की बात होते हैं, तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है दैट इज अ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड। अभी पीआईबी में क्या आया हुआ है? पीआईबी में आया हुआ है कि 125 साल कोडाई कनाल का ऑब्जर्वेटरी का हो गया। इसके लिए जो पिवटल जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज अ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, राइट, दैट इज इन विच लुक्स इनटू ऑल दिस टेलीस्कोप्स, है ना। ये सारे टेलीस्कोप को वहां पर ऑब्जर्व करते सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर जब टेलीस्कोप्स इन इंडिया की हम बात करें, तो वी हैव सो मेनी प्लेसेस। वी हैव नैनीताल, है ना, यू आर अवेयर ऑफ दिस। वी हैव इन राजस्थान उदयपुर ऑब्जर्वेटरी वी हैव, देन वी हैव माउंट आबू, गुरु शिखर, वहां पर भी हमारे टेलीस्कोप्स हैं। उसके अलावा जो है अभी जैसे कोडाई कनाल, एंड कोडाई कनाल इज अ वेरी ओल्ड वन, ब्रिटिश टाइम के टाइम बनाया गया कोडाई कनाल में, राइट। देयर इज अ ब्यूटीफुल लेक आल्सो देयर, भाई बहुत अच्छा लेक भी है, मैनमेड लेक है वो। यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ था, कोडाई कनाल का जो है वहां पर आता है। उसके अलावा जो है जैसे हैंडले, फिर एक जगह है महाराष्ट्र में, नारायण गांव बोलते हैं, नारायण गांव इन पुणे, वहां हमारे रेडियो टेलीस्कोप है ना। वी हैव रेडियो टेलीस्कोप देयर वेयर वी हैव बिल्ट ऑन दिस एरिया देयर एंड वी आर ऑपरेटिंग लाइक दैट। वहां पर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है दैट इज वो ये चीज है कि जब हम टेलीस्कोप की बात करते हैं सन, अब जैसे 125 ईयर्स कोडाइकनाल का है, तो जो सोलर ऑब्जर्वेटरी की जब बात होती है, स्टडी ऑफ द सन, तो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। तो यहाँ जो सोलर ऑब्जर्वेटरी के कॉन्टेक्स्ट में ये जो टेलीस्कोप के बारे में मैंने बताया, तो लेट मी जस्ट मेक अ फ्लो चार्ट हियर। जहाँ पे सन, सन के जितने भी कॉन्टेक्स्ट है, एक हम जो है स्पेस बॉर्न है, जैसे आदित्य मिशन, आदित्य एल1 मिशन है। दूसरा है ग्राउंड बेस्ड है। तो ग्राउंड बेस्ड में जो सोलर ऑब्जर्वेटरी जो है, अभी जो मैंने बताया कि दो जगह पे है। पहला आता है हैंडले, लद्दाख। और मैंने क्लास में बताया भी था, आई हैव डिस्कस्ड इन फ्यू ऑफ माय सेशन दैट दैट हैंडले लद्दाख इज इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। ये भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है, जहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज के लिए रात के टाइम में अंधेरा होता है। टू प्रिवेंट लाइट पोल्यूशन, देयर इज अ कंप्लीट डार्कनेस kept around this area of the telescope in Henley. That is also, we study the sun and is the first dark sky reserve of country. Because to minimize the sky glow, जो कि जनरली लाइट की वजह, आर्टिफिशियल लाइट की वजह से होता है, तो उसको कम करने के लिए या उसको मिनिमाइज जीरो करने के लिए वहां के जो लोग हैं, वहां रहने वाले लोग, वो कॉपरेट करते हैं कि वो अंधेरे रखते हैं। और जो स्टार गेजर्स होते हैं, वॉट एवर हु हैव द पैशन, हु हैव द हॉबी टू वॉच स्काई, एक्सप्लोर एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, दे कैन कम टू लद्दाख एंड एक्सप्लोर देयर दिस डार्क स्काई रिजर्व। बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी ऑफ सन। तो कहने का मतलब है कि हम सन को स्टडी स्पेस में भी कर सकते हैं और हम सन का स्टडी ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से कर सकते हैं। एक तो ये चीज है। दूसरा यहाँ पर आता है कोडाई कनाल का, जिसका 25 ईयर्स पूरा हो चुका है, राइट। एंड यू नो दैट कोडाई कनाल इज अ पार्ट ऑफ तमिलनाडु।
है ना, उदगमंडलम, ऊटी, कोडाईकनाल, ये सारे हिल स्टेशन है, वहाँ लोग घूमने फिरने भी जाते हैं। लद्दाख भी एक तरह का टूरिज्म का साइट है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये जो 125 ईयर्स जो सेलिब्रेट किया जा रहा है ऑफ establishment, this part, and what is very important here कि we have a digital, यहाँ पर जो है we have a digital the kind of a deposit or images of about sun। और एक चीज मैंने अभी क्या बताया, व्हाट, सी ऑलवेज रिमेंबर दैट जब यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा, व्हेनेवर द क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम, इन प्रीलिम्स एग्जाम, कुछ फैक्ट्स को याद रखना है। और मैंने अभी जस्ट बताया कि द सेम साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन हैज built a very important instrument, VELC, visible emission line coronagraph। coronagraph जो है corona of the sun, you know outer part of the sun is the corona, वहां से जो फ्लेयर निकलते हैं या वहां से जो रेडिएशन निकल रहा है, तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। वी कैन स्टडी विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रम। तो देयर द लाइंस आर देयर विद बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, based on frequency the lines are there। so that is a part of developed by such kind of a scientific organization। so that is where the Aditya mission becomes a important there, L1 mission there, राइट। तो ये चीज को ध्यान रखना है, ये चीज अभी न्यूज में था, तो यहाँ पे याद रखना है कि भारत में, इंडिया में ऐसे कई सारे टेलीस्कोप्स हैं, और ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप वहां पर क्वेश्चन आ सकता है, दैट कुड बी अ क्वेश्चन आज इन द एग्जाम, वो पार्ट को ध्यान रखना। ठीक है, तो अब मैं ऐसा करता हूँ, ये जो पार्ट मैंने किया है, लेट मी इंटरेक्ट विथ यू, राइट। जो लोग अभी यहाँ पर है, मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ मैं। सो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन टू आस्क, you can like unmute yourself, I can talk to you regarding any kind of thing there। मैं तब तक के लिए देख लेता हूँ जो लोग YouTube में ज्वाइन हुए, जिसमें one student is there, Rupesh has joined through the channel there, right। 3 people are watching right now, all right। So now anything, yes, Shreya, and all, are you able to understand here? Yes, sir. In main part, this is the main part, right, जो आपको ध्यान रखना है। Anybody want to ask any question? Otherwise I'll move to the next topic there। If there is no question, then I'll move to the next topic, right। तो मैं समझाता जाऊंगा सारी चीजें। तो ये चीज याद रखना है कि you have to remember that observatory in terms of space technology, one question comes in the exam, could be a one of the area, ठीक है। and since it has covered in PIB, you could be prepared for the question, है ना। you इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि वहां कोई भी क्वेश्चन आ जाए। कोई भी ऐसा टेलीस्कोप या कोई भी ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी न्यूज में आता है, उसको पर्टिकुलरली आपको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो अब मैं इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, दैट इज लेट मी गो टू द नेक्स्ट वन हियर। तो एक टॉपिक ये मैंने बताया। नाउ आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव रेड दिस समुद्र पहरे पहरे, हाँ हाँ, ये समुद्र के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ जो आर्टिकल है, लेट मी सी हियर, ये जो है, ये भी अभी न्यूज में आया हुआ था। ये अपलोड नहीं हुआ है। Anyway, what I'll do here, I'll take you directly to the site only then। I had a document, but this document was not properly uh, downloaded there, but I'll just open that one। See, when you go to the Google search, right, so you'll find here Samudra Prahedarth। ये अभी PIB में ये न्यूज में आया हुआ था, ये चीज। ये इंडियन कोस्ट गार्ड, ICG, राइट, इंडियन कोस्ट गार्ड, उसका देयर इज अ शिप व्हिच हैज बीन मेज्ड एंड कमीशन राइट नाउ, ये न्यूज में था। आई जस्ट शेयर द स्क्रीन फॉर ऑल ऑफ यू, you'll see right now this इंडियन कोस्ट गार्ड, है ना, समुद्र पहरेदार, ठीक है, समुद्र पहरेदार, इसको अभी कमीशन किया गया था गुजरात से, वहां पर जो। अब जब ऐसे कुछ भी न्यूज में आता है, चाहे वो नेवी से हो या
कोस्ट गार्ड के थ्रू हो। अब अगेन इज द फैक्चुअल थिंग, इज अ वेरी वेरी फैक्चुअल थिंग। तो यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड जो समुद्र पहरेदार जो है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ 95 मीटर लॉन्ग। ये इंडिजिनस है, is developed by indigenous, and basically it is for pollution response. I'll go to the main part of it. I'll write it down for all of you so that you're able to understand here. It is basically for the controlling pollution. Pollution control के लिए इसको रेडी किया गया। That is what had been given for oil spill। जैसे कि कोई भी अगर ऐसा है, उसको कंट्रोल करने के लिए इसको डेवलप किया गया। And it is a very important development because sometimes ocean may have some kind of a problem regarding the kind of pollution part of it. So that is where this comes into that. So let me go to the written part of it, right? Now look at it here. I'll write it down. So what is in the news here? This one. अब इसका क्या क्या main part है? What are the main part you have to be aware of this? What is the main aspect which you have to remember that? So first of all, it is Indian Coast Guard. See, Indian Coast Guard has got a lot of duties to discharge. Sometimes saving lives, right? Also in terms of security. Sometimes the illegal trade which happens there. Indian Coast Guard play very important role here, right? So this particular ship which has been developed here to control pollution of oceans, उसके लिए इसको बनाया गया। ठीक है, तो इट इज फ्रॉम इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट मी ब्रिंग हियर कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम ऑयल स्पिल, व्हेन देयर इज ऑयल स्पिल इन द ओशन एंड वी रिक्वायर इमीडिएट इमरजेंसी रिस्पॉन्स, वहां में तुरंत रिस्पॉन्ड करना होता है सो दैट द ऑयल डू नॉट स्प्रेड टू मेनी एरियाज, उसे कंट्रोल करने के लिए होता है। समटाइम दिस वन harmful algal bloom, it is given there when you read this document। जब आप पीआईबी के साइट में डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि एल्गल ब्लूम, कई बार क्या होता है हार्मफुल एल्गल ब्लूम होता है एंड दैट कंजेस्ट, राइट। और जब ये एल्गी डेथ होता है, व्हेन द एल्गी डाइज, तो आपने पढ़ा है एनवायरमेंट में कि व्हेन दिस एल्गी डाई, राइट, बैक्टीरिया विल ब्रेक डाउन द एल्गल बायोमास एंड व्हाट विल हैपन इन दैट केस, इन दैट कॉन्टेक्स्ट में ऐसा होगा कि when the bacteria break down the algal biomass, it uses oxygen, right, of the dissolved oxygen of the water. So that creates the problem in terms of loss of dissolved oxygen in the water bodies, whether it's a freshwater river, lake, or sea and ocean. तो वहां पर डेड जोन बन जाता है। तो यहाँ पर ये समुद्र पहरेदार जो है, समुद्र पहरेदार जो है, पहरेदार जो है, ये पहरेदार का काम ये है कि वो ये सब चीज जो है वहां पर उसको प्रोटेक्ट करेगा, है ना। जस्ट आई चेंज द स्पेलिंग हियर, पहरेदार, राइट। तो यहां पर क्या होता है कि दैट लुक्स इनटू दैट काइंड ऑफ एरिया। ठीक है, तो एल्गल ब्लूम जो है, लाइक फॉर एग्जांपल इट मे बी रिवर जॉइनिंग द सी, जहां पर सी वगैरह जो होते हैं, जहां पर एस्चुरी। तो व्हाट हैपन इन एस्चुरी, or let's say when it comes here, तो it brings a lot of nutrient, जो आपको पता है उसके लिए बोलते हैं यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। It brings a lot of nutrient there। तो उसके कारण क्या होता है, वहां पे एल्गी का ग्रोथ ज्यादा होता है। The algae grows very very fast in that area there। So there this river join the sea and ocean or estuary which bring that and or at the same time ocean side। So those kind of a bloom of harmful algae that can be removed by this समुद्र पहरेदार। नाम भी बहुत अच्छा है, पहरेदार मतलब सर्वेलेंस। तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, थर्ड पॉइंट कम्स सर्वेलेंस। इट सर्वेलेंस ऑफ marine pollution, right? The Indian Coast Guard will do this survey of the marine pollution। And also what is another thing here, remove
रिमूव पोल्यूटेंट, राइट, जो भी पोल्यूटेंट्स है, रिमूव पोल्यूटेंट, राइट, और कंटामिनेंट्स, whatever contaminants are there from ocean. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि दैट टाइप ऑफ थिंग देयर. इवन यू नो दैट प्लास्टिक नाउडेज, यू नो प्लास्टिक हैज बीन टॉक्ड, प्लास्टिक पोल्यूशन. कई बार रिवर के थ्रू प्लास्टिक आता है, यू नो, बट लाइक जैसे व्हेन यू टॉक अबाउट रिवर, राइट, मीटिंग द सी एंड ओशन, सी एंड ओशन, व्हेन द रिवर मीट देयर, राइट, तो द रिवर carries a lot of things here. Sometimes the river may carry the nutrient, you know, right? A lot of things are sometimes maybe garbage. Those kind of garbage can be carried by river, right? Or sometimes the river may bring the pollutant, right? Harmful pollutant. जैसे आपने environment पढ़ा है, you have read about कि जैसे कि for example fertilizer, pesticide, runoff जो होता है, when there is agriculture runoff, so those dissolved soil with all the chemical fertilizer, pesticide, all the nutrient may go to the river. From the river can come to the sea and ocean. Even sometime maybe the plastic product there. Nowadays, a lot of news is there about plastics. So this particular ship, Samudra Pehredar, will remove it. It will skim there. Like for example, oil spill, right? It is oil spill there. So it will skim. स्कीम मतलब इसके पास क्या होगा? This will use a skimmer. Skimmer is a kind of a instrument. Like skim, with the help of skimmer, right, pollutants. Whatever the pollutants are there, it will be skimmed off. Right, skim of pollutants. With the help of skimmer, there the device will be there which will collect. There's a garbage है, plastic है. It can just trash. जैसे हम घरों में सफाई करते हैं, स्किम उसको उठा लिया जाएगा. And that in that ship, it will be loaded and brought to the land. फिर उसको जमीन पे लाया जाएगा, जहां पर उसको ट्रीट कर सकते हैं, जैसा भी है वो हम कर सकते हैं. तो उसके लिए ये समुद्र पहरेदार को डेवलप किया गया, और अभी ये रिसेंटली कमीशन किया गया. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ना. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज विच हैव नाउ ब्रॉट हियर, राइट, क्लियर हियर. सो यहाँ पर देखना है कि वेन एवर यू आर रीडिंग एनी करंट एस्पेक्ट फ्रॉम एनी मटेरियल, जैसे कि मंथली मैगजीन आते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स होते हैं, वॉट एवर करंट अफेयर्स यू रीड, जस्ट ट्राई टू connect with that. If anything is there, so you are able to understand that, and that maybe a question can be asked on that. और कई बार मैं क्लास में क्या बताता हूँ कि इन्वायरमेंट क्वेश्चन विल बी लिंक्ड विद द टेक्नोलॉजिकल पार्ट, और इस बार जैसे क्वेश्चंस होंगे वो भी अप्लाइड होगा. दे विल आस्क विद अप्लाइड काइंड ऑफ क्वेश्चन देयर, राइट. तो ये पार्ट को ध्यान में रखना है. एनीथिंग यू वांट टू आस्क हियर, एनी क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक देयर? अभी मैं 4 days I will be going to some unconventional topics which have been not given too much of importance in current affairs material. I'm just trying to bring them. But I'm connecting the part of plastic and all this. You have already read. Many of the articles have talked about plastic pollution, right? All this kind of area about marine pollution. है ना? वो चीज वहाँ cover किया है. अब इसी में एक development है कि we have now coast guard a ship like which can collect or help protect sea and ocean from such pollutants, right? Any question you have? I'm looking at your chat box also there. Achha, if you don't have any question, then I can move to the next topic. Are you all able to follow me? Okay. So you are very silent. I think all the energy has been lost. You are maybe studying very hard these days, right? अभी आप पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे. You may be doing a lot of reading and all this. So sometime by this time, mentally it becomes tiredness. But don't worry, I will only take few of the topics, but useful topics which will help in the examination. And please try to connect this one with your basic thing what you have covered or the other current affairs. बाकी जो current affairs है उसके साथ connect करना है. ठीक है? Clear? Anybody want to talk to me, or I will move to the next one? Good evening, sir. Yeah, good evening. हाँ, कौन है? पंकज this side, sir. हाँ, पंकज. Yes, पंकज. Tell me. Yes. सर, जो समुद्र पहरेदार ये टॉपिक आपने बताया, तो ये केवल स्किम ऑफ ही करेगा या फिर जो कोस्टल रीजन है उसकी जैसे जो अदर चीजों की वजह से भी जो पॉल्यूशन फैल रहा है उस पे ऊपर ही फोकस करेगा, जस्ट लाइक पॉल्यूटेंट्स वहां से हटा रहा है,
अभी आपने जो लास्ट पॉइंट बताया कि पॉल्यूटेंट्स वहां से रिमूव कर रहा है, रिमूव ठीक है, कर रहे उसके हैं। अलावा और कौन कौन सा काम करेगा, जैसे कि क्लीननेस के लिए कोई अदर से कोई टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट वगैरह करना है, ये भी करेगा, या फिर केवल केवल पॉल्यूटेंट्स को ही नहीं वो साफ नहीं करेगा? नहीं नहीं, वो टेक्नोलॉजी का इन्हेंसमेंट भी करेगा, जैसे लैंड एरिया में जो भी पोल्यूटेंट्स हैं, है ना, वहां भी उसको किया जाएगा। ठीक है, वहां भी उसके लिए वहां किया जाएगा, जैसे कि लाइक हियर प्रवीणा हैज गिवन समथिंग comparatively better to follow. Could you suggest one? Yes, comparatively, if you want to follow any, she's asking, I'll address her question, कि which magazine you can cover there. But what is very important, what पंकज का कहना है, कि इसका मेन काम है कि सी एंड ओशन में जो पोल्यूशन है उसको रिमूव करना, उसको सर्वे करना, उसको रिमूव करना, एंड उसको लैंड पे ले आना, तो ब्रिंग इन द लैंड। लैंड में बाकी सिस्टम्स होंगे जो उसको वर्क करेगा, it will be working on that system and then try to remove it there. अब जैसे for example, I'll just show you there. If you look at, I'll just share my screen again. If you look at this part here, ये जो यहाँ पर है, ये हाई स्पीड भी होगा, ठीक है, और इसकी जो इनिशिएटिव्स है वो केवल ये चीज है कि वो, जैसे यहाँ सर्च, एक और चीज बताया गया है, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट गिवन, इट कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर नाइट सर्वेलेंस। इट कैन ऑल्सो कैरी आउट नाइट सर्वेलेंस, मतलब डे में भी सर्वे कर सकता है, नाइट में भी कर सकता है, प्लस इट हैज गॉट इंफ्रारेड, जैसे कि रात के टाइम क्या होता है, थर्मल कैमरास एंड ऑल दिस इंफ्रारेड बेस्ड थिंग्स आर देयर। अनदर थिंग व्हिच इट टॉक्स अबाउट इज दैट it is also has a dual role. See, Indian Coast Guard is known for protecting the coast from any kind of a threat, so it has also the military application. Simultaneously it is also going to help the pollution control, मतलब प्रदूषण को कम तो करना है, लेकिन उसका मिलिट्री रोल भी होगा। अब जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है कि मल्टीपर्पज टास्क होंगे इसमें, इसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर चेतक, राइट, ध्रुव, उसको पोजीशन किया जाएगा, इसमें गन भी होंगे, गन सिस्टम भी होंगे, प्लस में ये सर्च एंड रेस्क्यू और मेडिकल इवैक्यूएशन में भी हेल्प करेगा। मतलब कहने का मतलब पोल्यूशन का एक पार्ट है, लेकिन ये जो समुद्र पहरेदार है, इसका और भी रोल होगा। इसका केवल काम ये पोल्यूशन का मॉनिटर करना और उसको वहां रिमूव करना, ठीक है, वो लैंड बेस में लाके उसको वहां पर वर्क करना, बस ये काम है। ये चीज यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पर रिकवरी काम है, जैसे शिप इज कैपेबल ऑफ अनहिंडर ऑयल रिकवरी, खासतौर पर ऑयल स्पिल, बट वो ऑयल स्पिल को रिकवर करेगा, एंड देन स्टोरेज टैंक होगी, उसको ship will carry a storage tank, they recover the oil, put it in the tank, and then get it to the land. फिर उसको बाद में उसको ट्रीट किया जाएगा, या इट विल बी फर्दर प्रोसेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस देयर, दैट पार्ट ऑफ इट। तो ये चीज यहाँ पर है, 500 किलो लीटर इसकी कैपेसिटी है कि ऑयल को कलेक्ट कर सकता है टैंक में एंड ब्रिंग इट टू द लैंड जहां भी ऑयल स्पिल हो रहा है। तो अब ये समझो कि ऑल्दो इट इज कॉल्ड पहरेदार, समुद्र पहरेदार मतलब निगरानी रखना, टू मॉनिटर, टू सर्वे, टू सर्वेलेंस ऑफ द ओशन एरिया, तो it will also survey for the security point of view also there, plus it has a pollution control mechanism inbuilt in that, ठीक है। तो यहाँ पर वो वहां पे कोई चीज उसका लैंड बेस्ड इसके लाना होगा, वहां पे बाकी सारे काम नहीं होंगे, वो चीज नहीं होंगी, ठीक है, राइट। अच्छा ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट talk about this. Pravina has asked question कि which magazine to follow. Let me tell you there. See, अभी बाजार में मार्केट में you have so many magazines are there. Like for example, Vision IS का PT 365, right? So Vision IS has come out with PT 365 magazine. Then you know Drishti IS has got the magazine, right? Then even Forum IS has got the magazine. Insight. See, everyone has got Next IS, Wajiram, all have brought the magazines there. See, comparatively, if you look at which part to follow, what I believe is better if you go for not single magazine there. जैसे आप विजन आईएएस का पढ़ते हैं तो उसका भी है, अभी जितने भी इंस्टीट्यूट है सबके आ रहे हैं, ठीक है। मोर और लेस व्हाट आई फाउंड दैट विजन आईएएस दिस मटेरियल इज मोर सुटेबल फॉर मेंस एग्जाम, ऑल्दो दे राइट पीटी 365, बट वो उसके लिए ज्यादा बेटर होता है। You can go for comprehensive kind of a thing, right? जहाँ पर you have to see, I cannot like tell you about the other subject, but in science and technology and environment, what I have found is that you need to have a very comprehensive kind of a
PT reading material, not very bulky. It should not be very bulky because you have to prepare many subjects. And scientific questions are based on current affairs. Environment questions are also based on current affairs. तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो पॉपुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके मटेरियल को आप एक बार रिव्यू कीजिए, ठीक है. यू जस्ट सी द इंडेक्स कि व्हाट विजन हैज गिवन, व्हाट इनसाइट हैज गिवन, ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स आर गिवन. उसमें मोर देन आई टेल यू मोर देन 80% विल बी कॉमन टॉपिक्स. 80% the topics will be common. Only the few topics will be different in different magazines, right? Different magazines वहां पर होता है. तो वहां पर ये चीज करना है कि जो भी आप मैगजीन्स फॉलो कर रहे हैं, तो डोंट गो फॉर मेनी मैगजीन्स, राइट. डोंट गो फॉर मल्टीपल मैगजीन्स because you will be wasting your time and energy reading the same thing. 80% of things are the common. You don't have to look into that one. Only 10 to 20% will be different one. ठीक है, तो that's what you find here कि वो look into the. Pravina has asked me the question. Pravina, you can unmute yourself. Yeah, Hello, that, sir. yeah, Pravina, yeah. Did you get my point? Like, don't follow completely the magazine there. It's better to get different sources that. Like I know that it is very challenging part, but you don't have to worry about it. ठीक है? Pravina, are you able to understand? Yes, sir. Yes, sir. Science and technology environment, I will give you the document, don't worry. Okay, But sir. other subject, you can, I think this, you are in CKIS, right, Pravina? Yes, So that they have also got the magazine now and the website. yes, sir. They're following those kind of same content. See, what these people do, they look into the all newspapers, magazines, and the content which are given by many institute. And from there, they compile it. So CKIS, I have found very, comprehensive kind of material. So that you can follow there, right? You can follow in that way. Yes, Right? sir. And since I have interacted with you that you are going to appear for Indian Forest Service, right? Yes, You're that's why, for sir, Forest I Service. mainly asked regarding this. So we have to focus more on environment and science and tech related things. So Correct. we should have much more say on these subjects. Right. So Yes, that in that way, I will compile the material, give it to you there. Nothing to worry about it. Like yesterday, I have given the material from one of the institute. I've compiled and given to that. Even in Hyderabad, when I was covering, so I was using different topics there. So nothing to worry. You can also follow from there. Okay. So nothing yes, to worry about. Okay. Prasad is writing here that in his opinion, environment and science and technology preparation notes from different sources that is better rather than following the some fixed few magazines there. Don't worry, scientific environment, I am continuously this month and the next month, I'm trying to give you the input on that. So there will be, because after a long time, I'm getting this live session on my channel, on my YouTube channel. So that's what I thought, let's connect with the students. Which is, okay? So don't worry about it. Let me, so yes, it is a Pankaj, it is multi-dimensional kind of a coast guard ship called Samudra Peredar. वो सब चीज में काम आएगा. Okay, so let me go to another one more topic. Then I will get to the part of discussion there. Which I would like to add here. Let me just get back here. Just 1 second. I'm opening the document here. मैं डॉक्यूमेंट ओपन कर लूँ, फिर मैं इस पे बताता हूँ सारी चीजें जो है. तो एक टॉपिक जो और मैं लेना चाह रहा हूँ, जो so that you are aware of the area, you know, and it was also much in the news also there, right? Like a green credit scheme, right? Green credit scheme. Let me write here. Is another very important topic because it is a part of the achievement of Ministry of Environment Forest, and at the same time it was in COP28 Climate Change Summit UAE. वहाँ पे their government of India initiated this green credit scheme. So I'll just go through that. I will just tell you that part of it. Let me just share the screen right now again here. So you'll get this one. Let me take this topic here. And I think this can be a question asked in the exam. This topic which I'm coming here, this part. Green credit
Now, this is another important topic from the examination. I'll explain everything here. The first thing was that it was launched by India and UAE. So I'm just giving a background here. India and UAE during COP28 Climate Change Summit. Right, Climate Change Summit. You know, last year, this summit, that time it was just launched there. Right. In Dubai, it was launched there. Now, what is the very important here? It basically looks into two aspects. Right? It looks into two aspects. Here, in this one, two important aspects are there. One is that water conservation. And now you know that water conservation has become really, very important. Bangalore and many cities in India during the summer suffer with water scarcity, right? The first thing is here, it looks into water scarcity and the water conservation. And second, it looks into afforestation. That's the planting of trees, right? Green credit scheme, I'll tell you how it works. It looks into two areas. One is the water conservation and second is afforestation, right? Planting of trees and is a voluntary program. What is very important is a voluntary program there. Any person, right, family, organization can go for this particular green credit program. Anybody can go into that. It's a voluntary program, right? Now, which is for anyone to participate, for climate, for the climate part, for global warming, climate change perspective, that comes into that. Now, what is here? Any person or any family or any organization, so if they carry out this one, they earn green credits. The government will quantify how much carbon dioxide has been saved. Green credit for reduction of carbon dioxide gas and other greenhouse gases. Suppose that you have a plot of land, ठीक है? आपके पास जमीन है, you have a plot of land, and you go for plantation of trees. So your plot of land, depending on number of trees and how much carbon dioxide gas can be captured in the process of photosynthesis, what you call carbon sink, government will give you this credit. That will be a certificate. Just like carbon credit, you know, carbon credit system. It is very similar to, here, I'll write in bracket, it is very similar to carbon credit. Where whatever project captures CO2, captures greenhouse gas, they are awarded with the credit. So here green credit is given them. Now this green credit is a tradable commodity. This green credits which is earned, right, are tradable commodity. Right, which can be sold in the market. Just very similar to carbon credit there, which can be sold in the market. One can sell in the market, right? For that, there is a platform there. And let's say those companies which have given the target under Paris Agreement. You know that now for climate change, the agreement is Paris Agreement. So those given with target to cut down the emission, they can buy this green credits. So you can see, like, for example, in village area, we can go for the plantation, water conservation initiatives, and there this credit will be earned. So this is going to support livelihood, right? Livelihood of the people or communities at the grassroots level. तो ये सब मेन पार्ट है ना? इस प्रोग्राम का जो मेन
क्रक्स है ये चीज है कि अगर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर हम प्लांट्स करते हैं ट्री को, या हम पानी को सेव करते हैं, जल को सेव करते हैं, तो वहां जितना ग्रीन हाउस गैस कैप्चर हो रहा है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर हो रहा है, जो कमी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्रेडिट दिया जाएगा और उस क्रेडिट को बाजार में बेचा जा सकता है टू अर्न मनी। तो दैट इज बेसिकली इंसेंटिवाइज, है ना, ये एक तरह का इंसेंटिवाइज करता है बिहेवियरल चेंज। व्हाट आई राइट हियर, it is basically going to incentivize behavioral change, right? Behavioral change in the people there, right? So that we will plot wherever we get in our home, anywhere we can do the plantation of trees. We can save water, right? And this is a very important program under PM Life, Prime Minister Life. There's a program called Life, LIFE. So what you can write here? You can write the 7th point is implemented. This program in India is implemented under the PM Life program. You all know that. What is life? Lifestyle for environment. There's a lifestyle for environment. That's what I've written. It basically encourage behavioral change, changes in the lifestyle, eco-friendly, environment-friendly, climate-friendly. I'll use the better word, climate-friendly measures. So lifestyle for environment. उसके कॉन्टेक्स्ट में ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है ना. दिस कुड बी अ क्वेश्चन इन द एग्जाम, राइट? दिस कुड बी आस्क्ड इन द एग्जाम. Clear everyone? This one particular one, green credit initiatives, right? Anything you have to ask? I have taken all simple questions. If you are right now attending Zoom session and following me right now, then you do not have to worry for the exam. अगर आप साथ साथ में अभी मेरे मेरे जब जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सारे जो की पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आप साथ साथ में कर लेते तो आपका ये टॉपिक अभी हो गया. आपको बात के लिए नहीं सोचना है ना. बात के लिए फिर आपको टेंशन नहीं होगा. ठीक है. तो यहाँ पर जैसे चैट में आई एम लुकिंग एट द चैट हियर. एनीथिंग, एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? Okay, Dipesh is asking a question that government can also promote horticulture such that farmer income grows with growth in greenery. Yes, yes, very true. Dipesh, you are very, very correct. Whatever like horticulture, you know, whatever method which can come there, right? You are very correct, Dipesh. You are 100% correct. ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. उसके थ्रू किया जा सकता है. तो ये चीज को प्रमोट किया जा रहा है ना. अब इसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, व्हाट इज कॉल्ड ग्रीन इंडिया प्रोग्राम, राइट? आई जस्ट ऐड हियर, वी हैव अ प्रोग्राम हियर व्हिच आई वुड लाइक टू जस्ट ऐड हियर. दैट इज वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. क्या नाम है प्रोग्राम का? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. देयर आर 8 मिशंस आर देयर to fight climate change in India. There are 8 national missions are there, right? And out of this, there is a Green India mission there. So it will also support this Green India mission there. That is part of afforestation, right? And this Green India mission program, right? We are having one very important thing, national strategy, national Red Plus. There's very, very important initiative called Red Plus strategy. Is UN see here, when you see red, REDD, is basically is a UN initiative there, reducing emission. There is no name of the full form there. Emission from deforestation. That way, if we protect the forest, right? If we go for conservation of forest, management of forest, and also protect the land from getting degraded, right? Forest land to be degraded, that is called forest degradation, right? Forest degradation. This is the full form of that. And we create some additional carbon sink or carbon stock. अगर हम जो एडिशनल कार्बन सिंक को क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, यूएन गिव द फंड. दिस वन व्हाट यू फाइंड, इट इज सपोर्टेड बाय यूएन. यूनाइटेड नेशन गिव द फंड. Like there is a fund called this one, Green Climate Fund, GCF, which was set up in 2010, 2009 Cancun Summit
Cancun Climate Change Summit. At that time, it was proposal was given, Green Climate Fund. उसमें प्रपोज किया गया था GCF को बनाने के लिए. 2010 में GCF को जो बनाया गया, and it comes under World Bank. World Bank is a custodian. है ना, विश्व बैंक इसको देखता है, ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो कि पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, पहले क्या था क्योटो प्रोटोकॉल, अभी क्या है, व्हाट इज राइट नाउ, पेरिस एग्रीमेंट. तो उसके लिए फंड मिलता है, एंड दिस फंड कैन बी यूटिलाइज फॉर एफॉरेस्टेशन, राइट. दिस वी कैन यूज फॉर एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, planting of trees and all this, and create a carbon sink. So whatever the carbon capture we do, India get the fund for this, and then we utilize this fund for the forestry. What is the Green India Mission? Forestry program. And you all know that about 24% of our total geographical land have got this trees and forest cover. अगर भारत का पूरा देखें, फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट देखें, तो लगभग 24% जो हमारा भूभाग है वो पेड़ या वृक्ष या वन से ढका हुआ है. तो हमारा टारगेट क्या है, 33% का है. Our national target is that we need to have 33% of total geographical area of the country covered with trees and forest. So that is what the program goes into that. So I've connected this green, if you look at this one, green credit scheme or initiative. So that is linked with climate, and that again you can connect with our national program, national action plan on climate change. आप वहां उससे कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स था जो मुझे लगा कि ये डिस्कस करना चाहिए. हाँ, Sir, what are unclassed forests? Unclassed, CLASS. Yes, of northeast. Spell it out. UNCLASSED, unclassed forest of northeast. Forest conservation. Yeah, I got it. Yes, sir. I got that. Forest conservation का जो है ना, this is where in the northeast India. I'll explain here. What is this one? See, in northeast India, let's say Assam, Meghalaya, right? All these 7 states what we have. So here, what happens here? There are many of the forests which are not covered under the Forest Conservation Act. See, Forest Conservation Act, when you look at it, we have a law in the country. Let me explain here. Forest Conservation Act, when you say FCA, right, which basically looks into the forest protection and management conservation, this 1980, this part of it. It basically categorizes forest into 2 areas. One is that what one comes here? One comes here, that is a government owned forest, and sometimes maybe private or community owned forest could be there, right? They are basically brought under the law. And again, what you come across, again we can divide into 2 types here. Either it will be protected forest, where local people are given some rights, or it can be reserved forest, where the government reserved for conservation. That is where reserved forest, where economic activities are not allowed. That is reserved forest. Now, what is unclassed forest? Now look at unclassed forest. That means they have not been classified as forest under the law. अब जैसे इसमें एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, श्रेया ने बहुत अच्छा यहाँ पर टॉपिक को लाया है. I'll give you one very good example, sacred forest. See, many of the forests in northeast are non-government land, right? If you look at northeast India, what I would like to bring here, like in northeast India, right? Many this forest lands, land with the forest lands are not government, are community owned. Sometimes, you know, bamboo forests, right? Bamboo forest is there, or sometimes, you know, orchid, ornamental plants, वो सब ग्रो होता है वाइल्ड में. एंड कई जगह इसमें जो है, जैसे कि सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं, सेक्रेड फॉरेस्ट और सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं, जिसको अभी तक फॉरेस्ट के अंदर क्लासिफाई नहीं किया. कई बार माइनर फॉरेस्ट, स्मॉल फॉरेस्ट, जो कि अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट हैज नॉट बीन क्लासिफाइड.
they are called unclassed forest in Northeast India. That means they have not been properly officially brought under the law for conservation. उसकी वहां बात हो रही है ना, तो वहां पर उसको Yes, अनक्लास बोलते हैं, yes, sir. ठीक है। तो उसको वहां पर रखा जाता है कि उनको लॉ के अंदर नहीं किया गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू दिस वन, आई जस्ट टेक दिस वन, you just let's say if I go to this one, the part of news here, right? When you do the search here, unclassed forest, and it was all in the news also there, you know. You'll get the category of them. वहाँ पर कई तरह categories आते हैं, ये चीज दृश्य आईएएस में भी आया हुआ है। ट्राइबल लैंड भी जैसे unclassed जो है, और most of the land, see, most of the part of comes in unclassed forest. नॉर्थ ईस्ट में पर्टिकुलरली ज्यादातर लैंड जो है ऐसे लैंड होते हैं, मोस्ट ऑफ द लैंड्स आर लाइक दैट, लाइक हियर यू सी हियर, यहाँ पर ये जो पार्ट है ये चीज है। और उसका क्या होता है कि ये चीज जो है, now look at here this one, I'll read out there. See, Northeast India, you know, 6th schedule, right? 6th schedule, 4 states आते हैं, which are the 4 states coming under Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura, right? These are 4 states which have got special status of 6th schedule under the Constitution of India, right? तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे काउंसिल होते हैं, ऑटोनोमस काउंसिल्स होते हैं। In these 4 states, their autonomous councils are there, and they have got the powers, right? ऐसे काउंसिल में पावर होता है to make laws for the forest, है ना, except जो which is notified as a reserve forest by the state. Like एक होता है protected forest and reserved forest that the state government does. But wherever the tribal lands are there, आदिवासी जमीन या indigenous people tribal lands are there, where such a autonomous councils are there, they have their own kind of rules and guidelines. उनका अपना नियम होता है, उनका अपना कानून होता है, वो अपने हिसाब से वो काम करते हैं, उनकी अपनी इंडिपेंडेंस होती है काउंसिल की जो है, तो वो फॉरेस्ट के लिए लॉज बनाता है वहां पर, ठीक है। तो वो वहां पर आता है। अब जैसे ये दिया हुआ है नागालैंड मणिपुर, है ना, स्पेशल स्टेटस स्टेट से वहां पर है अंडर आर्टिकल 371, उसको भी अलग से दिया गया। अब देखो 4 स्टेट को 6 शेड्यूल में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नागालैंड एंड मणिपुर दे आल्सो गॉट सम स्पेशल स्टेटस, तो वहां भी आता है। तो ये क्या होता है, इसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है अनक्लास फॉरेस्ट, मतलब आप ये समझो कि 97.3% ऑफ द फॉरेस्ट कवर इन नागालैंड, जैसे यहाँ दिया है 88.2% मेघालय, 76% मणिपुर, 53% अरुणाचल प्रदेश, 43% त्रिपुरा and 33% Assam fall under the category that is what called this unclassed forest, जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर कौन सा आता है, स्टेट गवर्नमेंट आता है, उसके बाहर है, ठीक है। दिस डज नॉट मीन कि दिस लैंड्स आर नॉट कंसिडर्ड फॉरेस्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू द विलेज रिकॉर्ड दे आर फॉरेस्ट, बट ऑटोनोमस काउंसिल एंड द कम्युनिटी दे कंट्रोल इट, ठीक है। विलेज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह होते हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं, तो उनको अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। उन सबको कहते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहते हैं। दिस व्हाट इज गिवन द फॉरेस्ट। ये बहुत अच्छा दिया हुआ दिस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ये याद रखना, TN गोदावरम त्रिमुलपाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। गोदावरम जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट इन द गोदावरम केस, राइट, ऑन द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, right. There even they have given deemed forest. What is deemed forest? These are the forests which may be given the status of a forest, deemed forest, which in future can be called as a either protected forest or reserved forest. मतलब उसको भी deemed forest का दर्जा दिया गया है, यानी कि वो फॉरेस्ट मतलब लैंड विद ट्रीज है, और हो सकता है भविष्य में इसको प्रॉपर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का या रिजर्व फॉरेस्ट का स्टेटस मिल सकता है, तो उनको डीम्ड फॉरेस्ट के कैटेगरी में रखा जाता है। ये भी आपको बहुत सारा मिलेगा यहाँ पर, है ना, तो ये चीज वहां पर आता है, राइट। तो ये चीज का वहां पर तो लैंड जो डाइवर्सन वगैरह होता है, तो वहां भी ये पार्ट आता है। इज इट क्लियर हियर, दिस पार्ट व्हिच आई मेंशन हियर? ऑलराइट, सो विल डू वन थिंग हियर, आई हैव स्टॉप दिस वन। तो मैं एक काम ऐसा करूंगा कि ये जो मैंने अभी वर्ड जो लिखा है, आई विल कन्वर्ट इनटू PDF एंड शेयर इन माय टेलीग्राम चैनल, राइट। एंड दोज PIB का जो PDF है,
I'll also place in the Telegram channel, which you can read there, which you can follow that. Okay. Anything you want to ask? Tomorrow again, I'll discuss a lot of things there. I'll also go to the topics there. And I'm very, very thankful that you have joined here. And you're taking your precious time out. That's very important. Okay, in YouTube channel, Rupesh is there, Sagar has joined. Then M. Kumar is there. Then M. Kumar, then Shiva Sai Charan, that is also joined. So good evening, everyone. I think you have M. Kumar is asking what is skim off. Skim off is just like removing it, skimming, right? What is skim off? Skim off is basically like they're floating. Like I'll give you the idea here. It's a very simple thing. When you say skim off, let me make you understand here. Suppose it is floating, right? Let me tell you here. It is floating there, right? Suppose this is the ocean water, right? And suppose let's say the oil is there. Let's say crude oil or anything like, let's say algae is there. They're floating here, right? Let's say there's a floating there. Let's say there's harmful algae. What is the skimming there? There will be this kind of system here. The ship, this one, Samudra Pahreda, will have this kind of device, which is skim off, right? Just like we take inside and remove it, right? ये skimmer होंगे. This is skimmer. This device will be there, skimmer. So this skimmer will, what the skimmer will do? It will just take it there, निकालना, ठीक है? कई बार चीज करते हैं ना हम, we have a device to skim off, right? And this will be collected. This will be collected in the vessel and then brought there. जैसे आपको पता है ना छाली, cream. Sometimes milk we have a cream. When we boil milk, we have a cream. So that cream, what we do, we skim off. We remove it, right? It's a very simple language I can tell, that we have those kind of cream over the milk. So that what we do, we skim the cream so that we get only the milk. Same thing is here. Here, they will take out those harmful algae and all those kind of things there. This is what the Samudra Pahreda, there's a ship can help in this kind of removal of pollutant. Right? Even the oil spill, even you can take oil spill also. They skim it. That's what it means, right? I hope this M. Kumar, you're able to understand this topic there. Okay, Archit has joined right now, so he is also from one of the coaching institute. So good to see you all. So anyway, we'll end up the session here, right? Okay. So any doubt you have, any question, or shall we end the question area there? Right. Good to see you all, right? So I'm right now in Kanpur. And then go to Pune there. तो अभी मेरे पास इवनिंग में टाइम है, तो इसलिए मैं ये सारे सेशंस ले रहा हूँ. एंड डोंट वरी अबाउट द डॉक्यूमेंट. जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो मैं शेयर कर दूंगा मैं. Whatever compilation, whatever documents, even for any exam, Indian Forest Service also, or state level exam, वहाँ भी help होगा. तो वो I'll be sharing that one, right? Shall we end the class? I'll tell the class only. All right. So let's. If you don't have any doubt, then we can end up there. Okay. So thank you everyone, and good night. Those who have joined through YouTube channel, to them also, I really thank them. They have joined right now, and they're interacting there. So let me just see the messages, and then I will end up the session here. Right. Okay. Archit is from Vision IS 2018 batch. Long way back. Good to see you, Archit, here after a long time. He's asking about module. The module is over right now. Right, Archit, I've already covered environment module with SRIS.
वहां पर ऑलरेडी मॉड्यूल हैज बीन ओवर देयर, ठीक है, वहां पर मॉड्यूल मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है, तो दैट्स व्हाट ऑलरेडी हैज बीन डन देयर। हाँ, फ्यूचर इट मे बी देयर, बट ऑलरेडी आई हैव कवर्ड द मॉड्यूल इन सुपररंजन मैडम्स क्लास देयर, ठीक है। तो विल एंड अप द सेशन हियर एंड विल मीट टुमारो अगेन, विल हैव सम मोर टॉपिक्स। मैं ऐसा करता हूँ, आई विल बी डिस्कसिंग more number of topics tomorrow at 9 p.m. So you all can join that time and we can discuss the areas. तो मैं और भी टॉपिक्स जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है वो मैं कवर करूंगा मैं, ठीक है। ऑलराइट, सो थैंक यू, सो विल एंड अप द जूम सेशन हियर, ठीक है, and see you tomorrow then. Thank you, take care, bye bye. Thank you, thanks a lot. Any question there? No, sir. Okay, Pravina, thank you. So we'll meet tomorrow then. All right, thank you, take care, bye bye. Thank you.